Hello, 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 hello. Ito mara. A very good morning. Both the captains are here. Mangesh, the captain of Shivam Cricketers, and Amug Prabhu Desai, the captain of Tarvalem Sports Club. And with the official umpire Prashant Gadekar. 20 overs of the match, 6 overs of the power play. Mangesh is going to spin the coin. Amog is going to call. Heads, he says. Looks like tails. Tails, Mangesh, you have won the toss. And what is your take? Early in the morning, have you decided? We'd like to bowl first. There are a couple of changes in our team. Gaurav is out due to injury, and Piyush and instead of Gaurav, Sarvana is playing as our station. And climate is also good. And outfield, I think we have seen two matches, and last match we have chased very well. So let's hope so. We'll able. Once again, you want to chase. All the best for you. Amog been asked to bat first. You've got a good batting lineup.
The opening pair is really firing good. So good score that you're going to put up on the board after the completion of 20 overs. Even we wanted to bowl first. My target is somewhere around 160. Same like we have seen how the pitch behaves in the second innings. It's a bit on the slower side. So 160 will be a good target. KB and Suraj Tari is in a tremendous nick of batting. So hoping so once again 50-50 from both the batsmen. Yeah, it will be great for us if they perform, and we are like they will perform. Yeah. All the best for you. Have a good one. That's the news coming right from the center of the ground. Shivam cricketers won the toss. They are bowling first. Yeah, we go.
Third quarterfinal between Tarvalem Sports Club versus Shivam Cricketers. Toss won by Shivam Cricketers and they opted to bowl first. So two official umpires, Prashant Gadekar and Damodar Naik from Margaon, Prashant Gadekar from Aldona. I'd like to take the opportunity to welcome our official scorer, Abhishek. And you will be listening to Nadeem Ahmed in English and sometimes in Hindi. A warm welcome to all the supporting staff of both the teams. Yes, yesterday it was slightly a matter of a concern for the tournaments because of the notification from the Honorable CM. But however, the matches will continue. So to openers, Avishkar Mone, non-strikers end, and on the striking position is Suraj Tari. Goresh on the bowling mark from the Shiv Prasad Gaude end will begin the proceedings into the bowling attack. The fielding is nicely set. All are in position. Are you ready? And yes, we are. So the first delivery of a fresh day. The third quarterfinals. All the best for both the teams on behalf of Madkai Yuvak Sangh. Oh, rising delivery in good line to start with Gaurish. Oh, nicely taken. The ball was up with the top edge, and the wicket keeper takes the catch. The first breakthrough here on the second delivery of Gaurish. Suraj Tari is dismissed without scoring.
breakthrough here for Gaurish in taking the batsman who was in a terrific nick of batting, who in the last match contributed 57 runs of 26 deliveries. However, a partnership will be very important and very handy here for the team Tarvalem Sports Club. Big responsibility now after that fall of first wicket on Avishkar Mone, and KB just joining in at number 3. Look at the body language with that first wicket. They are bubbling with confidence. Watchfully played with the gentle hands in the short leg region. Could be a couple of runs. Yes, they are pushing for hard for 2. This is good running from Avishkar Mone. Such a good balanced side with senior and juniors coming together. And what a combination, what a balance in the team of Tarvalem. In spite of the first wicket fall, they have the ability to form a partnership and put up a good total, no doubt in that. SKB is in a tremendous nick of batting. Oh, nicely done. Wrist Yuvak. The ball will race down to the deep fine leg region. It's a boundary. He's straight away into making runs. Avishkar Mone, such a talented batsman. Doesn't take pressure, just bats his natural to the merit of the ball. And this is the very first over which is in progress after that fall of the wicket. This is a very second delivery. Some good runs are coming up as well in the very first over. So trying to reconstruct, rebuild, rectification of the damage done early on by Gaurish. Well left delivery. Setting slight a bit of a width there, but according to the official umpire's eyes, it is a playable delivery. Way outside the off stump. Wanted to reach to the ball just going, passing by in the hands of the wicket keeper. So had a bit of appeal there. That marks the end of the very first over. 6 for 1.
Today, two quarterfinals to be played, and today, two teams will be entering into the semi-final zone, and tomorrow is the day for semi-finals. Once again, a very good morning, warm welcome to all the spectators watching this match live on YouTube through AB25. A shot of length, pulled with the perfect timing. The ball is up and huge. It's gone out of the park for six. And the delivery, and he's always going for those kind of deliveries. No half measures, no two mind. Look at the sensible batting off from Avishkar Mone after that huge six in the deep square leg region. A sensible defensive stroke play, giving full respect to the delivery. Once again, watchfully played with the full face of the bat comes into play. Technically so good, calm, cool, relaxed frame of mind. Such a wonderful talent from Fonda Avishkar Mone. Nicely then just a tilt of the bat, pushed for a single in the point region. Trying to maintain just good line and length. Now Mahesh Riker is trying to avoid those short of length deliveries, half volleys, as he realized that one error, and Avishkar Mone went bang to that short of length delivery. And it wasn't that short of length delivery. In spite of that, Avishkar Mone is amazing. Oh, beautifully placed in the gap, KB. The stylish boundary from him. With that beautiful placement, goes up to 18 runs with the last ball boundaries. So a lot of boundaries come up in this over. In fact, two to be mentioned. One huge six, I beg your pardon, from Avishkar Mone. Nicely worked. And he has that realization where he can place and opening the face of the bat and angling it beautifully, KB. Sending the ball to the fence in the deep gully region. Beginning of the third over, it's once again Gaurish on the bowling mark from Shiv Prasad Gowde and to Avishkar Mone. Score is 18 for the loss of 1 after the completion of 2 overs. Once again, just letting the ball go. Both the batsmen are technically so good. They've got their basics right. They're skilled batsmen. And they are the strength of Tarvalem Sports Club. Today, unfortunately, Suraj Tari, who contributed and played a cameo of an inning, the last match of 57 in just 26 deliveries. Could not stay there on the crease for a long time with the skewed shot in the top edge of the ball, takes the ball up in the air and right in the gloves of the wicket keeper. And wicketkeeper making no mistake in grabbing that opportunity. And good partnership now which is forming between these two.
just wanted to play it away, but tapped the ball straight to the fielder in the point region. You can see the fielding in the offside for both the right-handers. Deep third man, point. There is a gully, cover, Mahesh Riker, and mid-off. On the onside, there is a field in the square leg, and mid-on. Nicely worked in the cover, straight to Mahesh Riker. Waiting is the call, a quick call from KB. Such a good calling from KB. All the good signs to form a partnership, and I definitely believe that this partnership will go for a long time. Oh, wanted the ball right in the block hole, but nicely dealt with a wrist as well. Inside edge of the ball, takes the ball in the deep long leg region. A boundary once again from Avishkar Moni. Wonderful timed boundary from Avishkar Moni. This is the third over and another boundary adding up to the total to take the score to 22 runs. Play with the soft hand, and yes is a call very quick. Cheeky single. What a wonderful partnership to see. Good call, good coordination. Both the batsmen are gelling well. There is no hesitation. There is no half measures. There is no confusion. There is no yes and no. Swift running. And with a good understanding. Marks the end of 3 overs. 23 for 1. Batting first, Tarvalem Sports Club.
Well bowled, full on, good length delivery. There is a message very clear from Avishkar Mone that no shot of length. Twice Mahesh Raikar has bowled that, and twice he has paid the price with a big six. The ball coming right out from the middle. What timing from Avishkar Mone. He full power, every muscle fired. Oh, shot of length this time, slightly way outside the off stump and wide signaled. Good effort from the wicket keeper. Stretched himself to get to the ball and stop there. Otherwise, the ball would have raced away in the deep third main region. There is Sarvan now comes in the ground. Good pace this time from Mahesh Raikar. Trying to bowl that extra bit of a pace there. Very aggressive bowling now from Mahesh Raikar. Otherwise, he's a medium pacer, is how we know he's bowling. But in this particular over, trying to bring that extra bit of a pace with swinging his arm very quickly. Oh, line is perfect as well. The ball kept low and slightly deviated though. Trying to bowl more of the offside. As he had realized anything is slightly in the leg side, shot of length. Avishkar Mone is a good picker of those particular deliveries. Nicely done, beautifully placed. In the gap, the ball will race away to the boundary. So more runs from the bat of Avishkar Mone, and the placement was just brilliant. And slide now, it's the matter of concern for the captain Mangesh of Shivam cricketers as the runs are coming in plentiful. A good punch on the back foot. There is a fielder. Will be a couple of runs here for sure. They will push hard for two. What a great example of control aggression from Avishkar Mone. Boundaries are coming up and then playing for singles and twos. Just get going. So a good delivery, a dot ball to mark the end of the fourth over. 37 for 1. Into the bowling attack from Shiprasad Gowde end.
In the afternoon, it's Chinmay cricketers Fonda will be taking on dazzling cricketers of Mapsa. In the fourth quarterfinal, so 4 hours gone by, score is 37 for the loss of 1 wicket of Suraj Tari. But what a great partnership between these two. Watchfully played with a gentle hands for a single. Just trying to stay their KB and trying to just give the support which is required for Avishkar Mone. And Avishkar Mone is doing his job as how we know that he does the job when he's been sent to the batting. He's got an amazing style of getting runs. Doesn't take the pressure of falling wicket, doesn't mind who's the bowler, what pace that he generates, what line that he maintains. He just plays his natural with such a great piece of timing. Much better delivery here from Sarvana this time. Rising delivery and the line perfect from Sarvana. Normally plays for Goa Police, the undisputed champions of T20. A policeman by profession, Sarvana. A slow one. Bring the variation. You're trying to just make think Avishkar Mone how to play this kind of deliveries. But Avishkar Mone, let me tell you, he's a silent volcano. When he erupts, it's a firework. Oh, lovely shot straight down the ground. Enough bat on that, and yes. The fielder will confirm what it is. It's a six. Just enough bat on that ball to take the ball for a six. Just maybe half of it beyond the boundary rope. Shot of length. He loves to play this kind of a shot and beautifully cut away. The ball races away straight in the deep point position this time. Well, he's sparing no bowler. Now he's taking Sarvana to the task with that rising delivery. Ferociously bowled bounce by Sarvana and a bit of, I think he's got a hurt on the finger. The quick rise. And that single marks the end of 5 overs with a single. 49 for 1.
the captain decided to bowl first. They asked Tarvalem Sports Club to bat. And in the very first over, Gaurish got the breakthrough, taking the wicket. In the very second delivery of the very first over, Suraj Dari, who was in a great form of batting in the last match, he contributed 57 runs of 26, was rewarded with the man of the match. But today just wanted to play the second delivery, the top edge. Ball takes the ball up in the air and right in the gloves of the wicket keeper. And after that, Avishkar Mone with the help of KB. And what a partnership and great going from him. Lot of runs every over. Boundary sixes, ones and twos, setting a good example of control, aggression. Not very aggressive, not too defensive. Nice, then look at that low delivery and just tilted the bat. Could be a couple of runs. Maybe the ball might just win the race, and yes, it does. The very first ball is shown to the fence in the deep third man region. So with these boundaries, 50 up for Tarvalem Sports Club. In fact, 53 runs. Fuller on, good drive. Full face of the bat. The ball coming right out from the middle, straight to the long off field. Excellent piece of work. Good quick throw, restricting the batsman on just one to take the score to 54 runs. Such a gentle giant. Such a perfect timer. Got an amazing temperament, Avishkar Mone. Well, today he is stealing the show. And in the last match, it was 57 from Suraj Tari and 50 plus from KB. As KB is in a great nick of batting as well. Every match that he goes out, 50 runs. Very consistent 50s from KB. Beautifully played. Look at the stance and the footwork, the body behind with the rock solid bottom hand and the elbow directing the delivery. Right in the block hole, well played. Once again, the full face of the bat coming to play. Both the batsmen are technically very sound. They've got good temperament, they've got the basics right, the skills wonderful. They can sustain any pressure and they can still survive. Just slightly away. This is a well, good line bowled by Rupesh. He's just not allowing the batsman, especially KB, to get the room. In the offside, he might just drive or cut it to the deep third man region. Nothing in the leg side where he can flick or hit with the shot of length delivery. Oh, this time slightly short of length and he hits it in the mid-wicket region. KB gets the boundary this time.
hit it beautifully in the mid-wicket region, gets the boundary. 6 overs gone by, and now you can see the field has been spread. What it was just two fielders outside 30-yard circle, and now it will be five. Most of them right on the edge of the boundary. Sarvanna. Oh, lovely shot. The ball is up, and there is a fielder this time in the deep square leg region. Oh, he's just lets the ball go. Mahesh Riker there. Congratulations, Avishkar Mone, for your swashbuckling, outstanding 50. Hands up. And he thanks God, he looks up towards the sky, takes the blessings of the Almighty as is the ritual. What a wonderful striker, what a wonderful batter. Gets going right after the wicket of Suraj Tari. He took the responsibility on his shoulder. And what a cameo of an inning, still contributing to the runs. Respectfully played. And he's got that short selection. He's not going everything for the big shot. He's waiting for the right opportunity. Anything short of length, half volley or juicy full tosses, he will go full power. And that is exactly how you need to bat in T20 format. Slightly short of length and had room to play it in the deep point region. Little fumble. He's gone for two. Excellent running as well. Oh, well, what has happened there? The ball might have hit Avishkar Mone, and he's saying nothing, not intentional. Yes, indeed, it wasn't intentional. He really got panicked and scared because in the international cricket we have seen a lot of such runouts. But those are intentionally to avoid the runout. They block the ball. Slow one, well bowled, beautifully bowled delivery. This was absolutely the change of pace in the line. Perfect. The ball kept low from Sarvanna. And couple of deliveries definitely has surprised Avishkar Mone. The deliveries of Sarvanna. Now who got a chance for playing 11. Right, and the block all beautifully worked with a little bit of a helicopter shot, and the ball going straight to the deep square leg region. Excellent piece of work there from the fielder. With that outstanding flick and good timing. With such a great distance, it's just one for the batsman. Sarvanna, what an inning that he played at Nityanand Sports T20. He was a consistent performer in that particular tournament. Oh, short of length, slow one once again with a very aggressive shot from KB. Is how KB is playing every match 50-50. In the similar manner, Sarvanna is also was batting, contributing 50 runs every match for Goa Police at Nityanand Sports T20 at Fonda Complex Ground. However, completion of 7 overs, 65 runs for 1.
Match live on YouTube. This is the third quarterfinals and the team battling Shivam Cricketers versus Tarvalem Sports Club. Well bowled. The line is perfect and variation in the length. Getting slightly aggressive this time. Viskar Mune. He's been so good so far. One mistake can cost the batsman his wicket. A shot of length. He loves to play. Once again, beautifully worked and played in the deep point position. Gets another single. So a lot of singles which are coming up in this over. That is the 8th over. And the bowler is doing a good job. But putting that, maintaining a perfect line. And of course, sometimes the fuller one, good length. Nicely worked to the fuller length and worked with the wrist KB for a single. So this is good over, tight line over. Considered just 4 runs from this over, Rupesh. That marks the end of 8 overs. 69 runs for the loss of 1. It's Sarvana to begin the 9th over. Batting first, Tarvalem 69 for 1. Fuller on once again, beautifully worked and played with the wristy shot in the deep. Mid-wicket reach for a single to take the score to 70 runs. Trying to maintain that perfect line. Both the bowlers are doing a wonderful job. Rupesh from the Alok Shirudkar and just conceded 4 runs in the last over. In the previous over. And now Sarvana wants to bowl that tight line. Doesn't want to offer anything for this batsman. Good length. Good length delivery, a little bit of once again right on the hand. He's definitely struggling with that pain. He needs some pain relief spray. He's in excruciating pain for sure. Twice the ball has hit him there.
And the best thing about Aviskar Moni is he's got that ability to read the length early, gets in a position with a full face of bat coming to play every time. Plentiful of bat on the ball. Whenever he strikes, he goes for the big one. He tries to play it in the gap. Oh, lofted shot, enough bat, and yes, it is! Right near our YouTuber Bharat Arkas. Look at this sensible batting. Sheer class and timing that took the ball straight down the ground, up and over. Viskar Moon is such a great timer. Absolutely, it's so entertaining to see him batting in such a manner. High quality performer, top class batsman. Slow one, but pulled beautifully. There is a fielder. Will he cut it off? He does well. He is very quick and agile. Wonderful fielding from this particular fielder who's stopping a lot of runs. That good fielding and restricted KB on one marks the end of 9 overs. 78 runs for one. And the partnership is also of 78 runs.
Good to see the sportsman spirit from the captain of the Tarvalem Sports Club, Amog Prabhudesai, allowing the field in the 10th over. And that's the reason why the game of cricket is called the gentleman's game. It's always been very disciplined team, Tarvalem Sports Club, under the captainship of Sandesh Prabhudesai. He not only grooms the young talent, but is also very disciplined gentleman. And I've got a huge respect for him, for this ability. Good line, once again a perfect line to maintain. Is known to maintain that perfect line. In the previous over, he just gave 4 runs. And with that perfect line and length, he could restrict such an amazing hitter of the ball, Aviskar Mone, who's in a sublime form, and KB, who pulls with the perfect timing. Once he gets the length right, he will go bang. Good length delivery, slightly just tilted the bat in the point region, gets a single. And someone should learn from Avishkar Mone how to get singles in spite of that tight line, good over, where you have nothing much for the batsman to work with. Floron, a good drive towards the long on region, picks up a single. And once again trying to rotate the strike and keeping the momentum going. These two almost 80 runs partnership with champions and seeing the ball like a football. They both are quite comfortable in playing any bowler of Shivam cricketers. And Aviskar Mone is just stealing the show. What a performer. Slight shot of lane, and look at that. Fantastic shot and excellent fielding as well. Good cricket to see. Not a bad delivery at all. Beautifully picked up in the covers. And lightning quick fielding there from the fielder. Full marks to him. That outstanding fielding marks the end of 10 overs. 84 for 1. मंगेश की ओर से आया और न्योता दिया तरवलम स्पोर्ट्स क्लब को कि बल्लेबाजी करने का। हालांकि पहली विकेट काफी जल्दी गिरी, यानी कि दूसरी गेंद पर ही पहली सफलता। उसके बाद जिस प्रकार से साझेदारी हुई, पार्टनरशिप बनी, बिल्कुल लाजवाब। तो हर्ष को लगा है गेंदबाजी के क्रम में शुरुआत होने जा रही है 11वीं ओवर की। शिव प्रसाद गावड़े एन की ओर से सामना करेंगे अविष्कार मोने। पटकी हुई गेंद फिर से एक बार कलाइयों के बदौलत खेलते हैं, इस बार पॉइंट की दिशा में सुंदर फील्डिंग के साथ गेंद को वापस किया, 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 85 रनों पर। तौर पर यह कहा जा सकता है कि तरवलम स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर बिल्कुल 150-160 के पार जाने की अपेक्षा। जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है दोनों के बीच, क्या ही लंबी साझेदारी। अविष्कार मोने और के भी अपने 50 रन पार बल्लेबाजी करते हुए अविष्कार मोने आज के दिन उन्होंने ठान लिया है, जैसे ही सूरज तारी आउट हुए टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली। और बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी करते चले आ रहे हैं और उन्हीं की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 85 रनों पर, यानी कि 8.4 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाती हुई टीम
फुल ऑन, सुंदर शॉट, वहां पर फील्डर की मौजूदगी और एक कैच के साथ केबी को आउट किया। आखिरकार सफलता मिली हर्ष को 11वीं ओवर पर और विकेट गिरा केबी का, यानी कि दूसरा विकेट गिरा तरवलीम स्पोर्ट्स क्लब का। खेलना चाहते इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, यानी कि ऑफसाइड के काफी बाहर, और क्या ही सुंदर ओवर जो कि घटा और एक कामयाबी मिली हर्ष को। 11 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है और 11 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 85, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए तरवलीम स्पोर्ट्स क्लब। बीच का संघर्ष देखने लायक। तो शुरुआत होने जा रही है 12वीं ओवर की। फिर से एक बार रुपेश जो कि गेंदबाजी के क्रम में, आलोक शेरुकर एंड की ओर से, और इस टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है कलाइयों के साथ खेल दिया इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में। और इस टूर्नामेंट के जरिए याद किया जा रहा है लेट आलोक शिरोडकर जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी थे अल्डोना से, और लेट शिव प्रसाद गावड़े जो हमारे बीच नहीं है। तो उन दोनों को एक समर्पण, एक श्रद्धांजलि भी दी जा रही है इस टूर्नामेंट के तौर पर। तो फिलहाल हल्के हाथों से खेल, एक रन आसानी के साथ बटोर लिया। और सोमेश प्रभु देसाई भी बिल्कुल एक बड़े कद के बल्लेबाज, काफी सुंदर बल्लेबाजी उनकी ओर से होती है और एक ऑलराउंडर परफॉर्मर। बिल्कुल इनसाइड आउट का प्रयोग, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, इस बार कैच छूटा, एक मौका मिला और गेंद गई 4 रनों के लिए। यहां पर जीवनदान मिलता हुआ आविष्कार मोनी का, और रुपेश काफी नाराज, जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट हो सकता था।
था मगर जाता रहा हाथों से, काफी नाराज, क्योंकि सभी गेंदबाजों का केवल एक हेतु कि आविष्कार मोने को किस प्रकार से आउट किया जाए और रनों को सीमित किया जाए। फिर से एक बार गेंद हवा में, वहां पर फिर से एक बार मौका, इस बार महेश रायकर ने कोई गलती नहीं की और आविष्कार मोने मिस टाइमिंग के साथ एक आसान सा कैच देकर लौटे और बिल्कुल तारीफ करनी होगी, क्या ही बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। मगर इस मौके पर थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर दिखाई दी आविष्कार मोने की ओर से। बिल्कुल शानदार 71 रन बनाए और अपने आप से काफी नाराज। तो बिल्कुल तालियों के साथ उनका स्वागत होता हुआ। 71 रनों की पारी खेली, 71 रन। क्या ही शानदार पारी, बिल्कुल अपनी टीम को बढ़त दी और उस बढ़त के साथ टीम अब अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन पर जो कि दिखाई दे रही है। तो फिलहाल मैदान पर उतरे हैं टीम के MS धोनी। अभिजीत नाइक अब तक कुल मिलाकर 3 विकेटें गिरी हैं और काफी जल्दी से विकेट अब गिरती हुई इस टीम की। पहली विकेट गिरी केवल दूसरी गेंद पर, उसके बाद क्या ही लंबी 80 रनों की साझेदारी, पार्टनरशिप जो कि दिखाई दी आविष्कार मोने और केबी के बीच। मगर अब दोनों ही नए बल्लेबाज, सोमेश प्रभुदेसाई जो कि स्ट्राइक पर, अभिजीत नाइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ब्लॉक होल में करने का प्रयास, मगर सुंदर कलाइयों की सुंदरता से खेल दिया इस बार। लॉन्ग ऑन की दिशा में इस 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 92 रनों पर। दर्शकों को बता दूं कि ये तीसरा क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला चल रहा है। 2 टीमें सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं, MLT साकली और आमोना क्रिकेटर्स। फुल टॉस का प्रयोग इस बार खेल दिया है अभिजीत नाइक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में और अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। स्कोर को पहुंचाया 93 रनों पर। अब धीरे धीरे फिर से एक बार एकाग्रता, एक साझेदारी की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 12 ओवरों की समाप्ति, 93 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बार हर्ष बॉलिंग मार्क पर।
हल्के से केवल दिशा दी और फील्डर को पाया शॉट गली की दिशा में। सुंदर फील्डिंग के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई 13वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है और स्कोर 93 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर पहली बल्लेबाजी करते हुए तरवड़िम स्पोर्ट्स क्लब की टीम बैकफुट पर खेलने का प्रयास। इस बार तेज गति से गेंद गई, हल्की सी वहां पर फंबल जो कि विकेट कीपर द्वारा एक रन लेने पर आमादा किया बल्लेबाजों को। बाई का इशारा। काफी बेहतरीन अंपायरिंग होती हुई प्रशांत गडेकर जो कि एक जाने माने काफी मशहूर ऑफिशियल अंपायर, काफी सुंदर अंपायरिंग उनकी ओर से, जिन्होंने मनोहर पर्रिकर टूर्नामेंट में भी अपनी बेहतरीन अंपायरिंग की। हल्के हाथों से खेल दिया इस बार और सुंदर रनिंग, बिल्कुल इस एक रन को 2 रनों में तब्दील किया। हल्की सी ओवर थ्रो वहां पर हुई। तो तरवड़म के डगआउट में आविष्कार मोने हल्के से भाग्यशाली रहे। आप देख सकते हैं थोड़ी सी बदलाव की गई फील्डिंग में। बैकफुट पर खेलने का प्रयास इस बार कुलाइयों की बदौलत। लेग बाय का इशारा, गेंद निकली थाई पैड से और इस एक रन के साथ धीरे धीरे अब स्कोर बढ़ता हुआ। सत्तानवे रन। सुंदर शॉट, इस बार सही पकड़ बनाई अभिजीत नाइक ने, मगर वहां पर फील्डर को भी पाया केवल 1 रन पर संतुष्टि प्राप्त की। तो धीरे धीरे अब 100 के करीब आता हुआ स्कोर 98 रनों पर जा पहुंचा है इस 1 रन की मदद से, जो कि खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में अभिजीत नाइक, जो हुबहू MS धोनी की तरह दिखाई देते हैं मैदान पर। हल्के हाथों से खेल दिया, पूरा सम्मान दिया इस गेंद पर, सुरक्षात्मक तरीके से खेलकर 13 ओवर की समाप्ति होती हुई 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाद 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 14वें ओवर को लेकर आए हैं विशाल आलोक शिरोडकर, इनकी ओर से शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। 7 ओवर अभी भी बाकी और देखना होगा कि इस 7 ओवर में किस प्रकार से रन गति को बढ़ाने का प्रयास होता है बल्लेबाजों द्वारा। तो निश्चित तौर पर क्या ही संघर्ष होता हुआ गेंद और बल्ले के बीच, और क्या ही कड़ा मुकाबला इन दोनों टीमों के दरमियान। शिवम क्रिकेटर्स के सामने बिल्कुल एक चुनौती रहेगी कि किस प्रकार से रनों को सीमित किया जाए। हालांकि बिल्कुल लाजवाब पारी खेली आविष्कार मोने ने,
लंबी बढ़त दिलाई अपनी टीम के लिए, 71 रनों की पारी खेली केवल 46 गेंदों में। हालांकि सूरज तारी कुछ योगदान आज के दिन नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए। पहले गेंद पर सुंदरता से खेल दिया है, वहां पर फील्डर की मौजूदगी और एक सुंदर फील्डिंग के साथ सरवन्ना ने गेंद को रोका और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल एक ऑलराउंडर परफॉर्मर है सरवन्ना और ये 100 रन पूरे तरवड़े स्पोर्ट्स क्लब के इन 2 रनों के साथ 14वें ओवर की शुरुआत में 100 रन पर जा पहुंची टीम तरवड़े स्पोर्ट्स क्लब। हाफ वाली पर सुंदर शॉट, मगर फील्डर को पाया। उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग होती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और वहां पर बैकअप फील्डर भी मौजूद था। हल्के हाथों से खेल दिया इस बार पॉइंट की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ बटोर लिया अभिजीत नाइक ने। अब सोमेश प्रभु देसाई को टीम की पारी संभालनी होगी और फिर से एक बार अगर एकाग्रता साझेदारी बनती है तो फिर बिल्कुल रनों में बढ़ोतरी होगी, रन तेजी से बढ़ेंगे। लोअर फुल टॉस पे हल्के हाथों से खेल दिया, शॉट मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। तो बिल्कुल वही रणनीति जिस प्रकार से आविष्कार मोने और केबी खेला कर रहे थे, इक्का दुक्का और मौके की तलाश में, जब मिलेगा मौका मारेंगे छक्का या फिर सुंदर चौका। पटकी हुई गेंद इस बार ऑफ साइड में खेल दिया था कलाई के बदल, मगर सीधे फील्डर को पाया गली की दिशा में। फिर से एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं फील्डिंग डीप थर्ड मैन पे सरवन्ना सबका अन्ना और डीप पॉइंट पर फील्डर की तैनातगी, गली में फील्डर गौरीश, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में और डीप लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात। पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट, मगर बिल्कुल शॉट मिड विकेट फील्डर की ओर खेल दिया। महेश रायकर हैं वहां पर तैनात। और ऑन साइड की अगर बात करूं, इससे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रनों पर पहुंची है टीम, 3 विकेट के नुकसान पर। वे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, यही लगता है कि गेंदबाजों की जमकर पिटाई करेंगे।
धीमी गति से ये गति परिवर्तन, यहां पर सुंदर डाइव लगाई मगर गेंद गई डीप फाइनल की दिशा में। 4 रन, वाइड का इशारा और ये चौका। के फेवर में एक फायदेमंद सौदा साबित होता है मगर इस बार महंगा साबित हुआ। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, इस बार पूरे बल्ले से कवर की दिशा में जहां पर महेश रायकर तैनात है। 1 रन आसानी के साथ बटोर लिया अभिजीत ने। बिल्कुल जमकर साथ निभा रहे हैं सोमेश प्रभुदेसाई का। और फिर से एक बार पारी को संवारने की कोशिश प्रयास होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। पटकी गेंद, सुंदर शॉट डीप स्क्वायर की दिशा में। वहां पर सबसे बेहतरीन फील्डर मौजूद हैं, बंटी। उस सुंदर थ्रो के साथ इस बेहतरीन शॉट पर भी केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को। तो जिस प्रकार से उस ओवर फील्डिंग हो रही है, बिल्कुल काबिल तारीफ उस फील्डर की। पटकी हुई गेंद, काफी उछाल प्राप्त किए हल्के हाथों से केवल खेलकर। हालांकि रन लेना नहीं चाह रहे थे मगर सोमेश प्रभुदेसाई ने मजबूर किया कि दौड़े और आसानी के साथ 1 रन जो कि पूरा होता हुआ। तो धीरे धीरे अब रनों में वृद्धि होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, मगर बिल्कुल मौके की तलाश में रहेंगे। कड़ा प्रहार करने का प्रयास, गेंद नीचे को रही, बिल्कुल सटीक लाइन गौरीश की ऑफ साइड में कराई थी। और इस बार हल्के से फंबल होते नजर आ रहे हैं कप्तान विकेट कीपर मंगेश। एक मौका जरूर दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि रन बढ़ाएं। संभल कर खेला इस बार हल्के हाथों से कवच की दिशा में। 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 112। 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 112, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर। विशाल फिर से एक बार गेंदबाजी के क्रम में बिल्कुल सुंदर गेंद के साथ शुरुआत करते हुए 16वीं ओवर की स्कोर 112 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाज आउट होने वाले सूरज तारी बिना खाता खोले लौटे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आउट हुए केबी, जिन्होंने 16 रनों का योगदान दिया। पटकी हुई गेंद, सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर की दिशा में। फिर से एक बार सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा, रनों को रोकने में कामयाब रहे फील्डर। केवल 1 रन पर रोका सोमेश प्रभुदेसाई को। और जिस प्रकार से शॉट लगाया था, बिल्कुल अब कड़ा प्रहार करते हुए गेंदबाजी पर सोमेश प्रभुदेसाई। अब गियर बदल कर बल्लेबाजी करने का प्रयास होता हुआ सोमेश की ओर से, मगर अभिजीत इक्का दुक्का के साथ एक मजबूत सहारा प्रदान करते हुए सोमेश्वर प्रभुदेसाई को। मुझे भी अभी भी याद है कि जब 12 वर्ष पहले किट बॉय के तौर पर आया करते थे संदेश प्रभुदेसाई के साथ चिकाली स्पोर्ट्स
ग्राउंड पर। सुंदर शॉट, बिल्कुल टाइमिंग बढ़िया, उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग होती हुई। शायद मुझे याद नहीं कि संदेश साहब को वो दिन याद है। सत्यन बेलेकर, सिद्धू वेरेकर, बाबूश लोटलीकर साथ में होते थे उनकी टीम के। इस बार सुंदरता से खेल दिया, लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच खेल दिया। 2 रनों का अवसर, यहां पर मौका, बिल्कुल सुंदर रन के साथ 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के साथ स्कोर को पहुंचाया 116 रनों पर। बिल्कुल संदेश साहब की ओर से एक संदेश जो कि जाता हुआ सोमेश को कि पूरी ताकत से मारे। एक बार टाइमिंग पर यहां पर हल्की सी चूक हुई। तो 117 रनों पर जा पहुंचा स्कोर का आंकड़ा 16 ओवरों की समाप्ति के बाद। 16 ओवर समाप्त, 117 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंद और वाइड से स्कोर को पहुंचाया 118 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आकर खेलना चाह रहे थे। सुंदर लाइन, वहां पर गेंद लगी बिल्कुल हेलमेट पर। बिल्कुल एक मजबूत खिलाड़ी हैं सोमेश्वर प्रभुदेसाई, एक योद्धा बल्लेबाज। कई मैचों में मैंने देखा है कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग के साथ। एक कंप्लीट जो कि पैकेज कहा जा सकता है आप क्रिकेट का, लेदर क्रिकेट हो या फिर टेनिस, बिल्कुल एक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं सोमेश प्रभुदेसाई। इस बार खेलने का प्रयास, टाइमिंग पर काफी बार जो कि चूकते नजर आ रहे हैं। कभी कभार जब टाइमिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर चौका छक्का बटोर लेते हैं, मगर टाइमिंग पर अक्सर चूक रहे हैं इस इनिंग में। तो अगर टाइमिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे तो निश्चित तौर पर रन जरूर
बढ़ेंगे तरवड़े में स्पोर्ट्स क्लब के लिए। तो फिलहाल अभिजीत MS धोनी स्ट्राइक पर। खेलने का प्रयास, काफी गेंदें डॉट करा, यानी कि अच्छी ओवर जो कि घटाते हुए हर्ष। ये 17वीं ओवर जो कि प्रगति पर और रनों को सीमित करने का बिल्कुल बढ़िया प्रयास होता हुआ। हालांकि शुरुआत की थी एक वाइड के साथ, मगर अब लाइन और लेंथ काफी सटीक, सुंदर गेंदबाजी हर्ष की। फिर से एक बार खेलने का प्रयास, थोड़ा सा फंबल, मगर मौका नहीं देगा बल्लेबाजों को। फिर से एक बार चूके अभिजीत, तो काफी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर लाइन बिल्कुल सटीक रखी है हर्ष। कोई अवसर, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि फुटवर्क के सहारे आगे को आए, हाफ वॉली पर गेंद को ले और एक सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेजें गैप में, या फिर इक्का दुक्का रन ही बना ले इस ओवर में। फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि सोमेश पर्वत भी काफी नाराज होते हुए। इस प्रकार से लगातार 3 गेंदें अब डॉट कराई है अभिजीत नाइक ने। क्रॉस खेलने का प्रयास, अगर सीधे बल्ले से खेलते हैं तो निश्चित तौर पर 1 रन तो आसानी के साथ जरूर मिलेगा। हर एक गेंद में 1 रन लेना जरूरी। फिर से एक बार काफी नीचे को रही गेंद, यानी कि एक सुंदर ओवर घटाया हर्ष ने। 17 ओवरों की समाप्ति, केवल 1 रन दिया, 2 रन माफी चाहूंगा इस ओवर में। और 17 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब पहुंचा है 119 रन। तो अब बची 3 ओवर। तो देखना होगा कि 3 ओवरों में, यानी कि 18 गेंदों में कितने रन बनाने में सक्षम रहेंगे बल्लेबाज। तो फिलहाल सोमेश थोड़े से खफा नजर आते हुए, जिस प्रकार से रन बनाने में हल्के से नाकामयाब रहे। मगर बची हुई 3 ओवर में अगर जमकर बल्लेबाजी होती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और दोनों ही बल्लेबाजों में क्षमता है। खास तौर पर मैं सोमेश प्रभुदेसाई की अगर बात करूं तो बिल्कुल एक दिग्गज खिलाड़ी, एक उभरते हुए स्टार परफॉर्मर जिसे कहा जाता है, एक बेहतरीन खिलाड़ी। न सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में भी उन्हें महारत हासिल है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि 3 ओवरों में कितने रन बना पाते हैं। पहले गेंद पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास पूरी तरह से चूके। गेंद और बल्ले के बीच का ये संघर्ष अब देखने लायक है। बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं, मगर आक्रामक रवैया अपना है सोमेश प्रभुदेसाई ने। गेंद हवा में तो देखना होगा कि कैच होगा या नहीं।
अरे कैच ड्रॉप, 2 रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का मौका यहां पर जाता रहा। 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और ये आउट का इशारा, केवल 1 रन, यानी कि अभिजीत MS धोनी आउट होकर चलते बने। Wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Take us to the girl, them broke out on the floor. From you don't wanna work as performer. Green banana, but down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. फिर से एक बार गेंद हवा में, इस बार लंबा छक्का, लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार ताबड़तोड़ हमला सोमेश्वर प्रभुदेसाई की ओर से। Can be the mom. Oh oh. From fight pose and girl, you got the chest out, but you know we shot, cause girl, you impress out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make you de-stress out. तो 18 ओवर की समाप्ति, इसको जब पहुंचाए 138 रनों की समाप्ति, इसको जब पहुंचाए 138 रनों। Girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Girl, know some crazy now. This strange traffic and a budget and flavor show. Oh oh. Time to make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh oh. Woman, don't play me now, cause I'm a fits and fat, not greedy, yo. Oh oh. My loving is the way to go. Well, woman, the way this time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Play like me with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, just park it right here. और बिल्कुल अब गियर बदल कर बल्लेबाजी करने का इरादा कर चुके हैं सोमेश्वर प्रभुदेसाई। 2 लगातार लंबे लंबे छक्के लगे, एक डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, दूसरा लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर, 6 रनों के लिए। 18 ओवरों की समाप्ति, 138 रन। तो बचे हुए 2 ओवरों में देखना होगा कि कितने रन बटोरने में कामयाब रहे। तो फिलहाल बिल्कुल रोचक रोमांचक मैच होता हुआ। स्ट्राइक पर स्वयं कप्तान अमोघ प्रभुदेसाई।
संभल कर खेला, एक रन के साथ स्ट्राइक दिया। इसी प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए, जिस प्रकार से चतुराई से समझदारी से अमोघ ने एक सिंगल निकालकर 140 रनों पर खेलने का प्रयास। फिर से एक बार बिल्कुल 140 रनों का पीछा की थी टीम शिवम क्रिकेट ने पिछली मैच में उल्लास ओपकर की मदद से। और बोरी स्पोर्ट्स क्लब को प्री क्वार्टर फाइनल में मात देती शिवम क्रिकेटर्स ने। फिर से एक बार लंबा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी फंबल। हालांकि गेंद ग्लाउज में, फिर भी रन लेना चाहते हैं सोमेश्वर प्रभु देसाई, मगर इस प्रकार की हिम्मत किसी और बल्लेबाज ने अब तक नहीं दिखाई इस टूर्नामेंट में। गेंद है ग्लाउज में और फिर भी रन लेने का प्रयास। हर्ष और खेलने का प्रयास पूरी तरह से चुके, क्लीन बोल्ड होकर कप्तान लौटे। इस प्रकार से अब तक 5 विकेटें खो चुकी है टीम तरवड़ेम स्पोर्ट्स क्लब। गिरती जा रही हैं तरवड़ेम स्पोर्ट्स क्लब के।
तो अगले बल्लेबाज प्रज्योत उतरे हैं मैदान पर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और ये रन आउट का मौका, प्रज्योत आउट। तो बिल्कुल 141 रन, 141। और तो कुल मिलाकर अब तक 7 विकेटें गिर चुकी हैं टीम तरवड़ेम स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और साइश जो कि मैदान पर उतरे हैं। 141 हुआ स्कोर, 7 विकेटें गिरी हैं। तो अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज विशाल। माफी चाहूंगा, वहां पर बदलाव किया गया है। आलोक शिरोडकर एंड की ओर से सरवन्ना को ला गया है आखिरी ओवर में। स्कोर 141। और देखना होगा कि बचे हुए 6 गेंदों में कितने रन जोड़ने में कामयाब रहेंगे सोमेश्वर प्रभु देसाई। तो ये मुकाबला होगा सरवन्ना और सोमेश के बीच। पहले गेंद पर सुंदर शॉट और केवल 1 रन पे रोकने का प्रयास। सुंदर फील्डिंग के साथ आप देख सकते हैं अंपायर की पोजीशन बिल्कुल बैठ गए हैं, कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते प्रशांत गड़ेकर, क्योंकि थ्रो की लाइन ऑफ फायर में आ गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, 2 रनों का प्रयास बिल्कुल रहेगा मगर केवल 1 रन पर सीमित किया। तो सुंदर गेंदबाजी होती हुई हर एक गेंद पर केवल 1 रन देते हुए सरवन्ना स्कोर को पहुंचा 143 रनों पर। तो बची हुई 4 गेंदें, शुरुआत हुई पहली गेंद पर 1 रन स्क्वायर की दिशा में, दूसरी गेंद पर 1 रन बल्लेबाज की ओर लॉन्ग ऑन की दिशा में, पटकी हुई गेंद काफी नीचे को रही, बिल्कुल जिस प्रकार से उम्मीद की थी कि गेंद उछाल प्राप्त की गई बिल्कुल नीचे को रही और एक डॉट गेंद कराई। अब तक 3 गेंदें डाल चुके हैं और केवल 2 रन दिए हैं सरवन्ना। और इस बार सुंदर शॉट, गेंद काफी दूर चली गई। 6 रनों के लिए आखिरकार छक्का मारने में कामयाबी मिली सोमेश प्रभु देसाई को। रनों पर 149। फिर से एक बार कड़ा फरार करने का प्रयास, बिल्कुल पूरी तरह से, चूंकि अब तक 8 रन दे चुके हैं सरवन्ना 5 गेंदों में। तो देखना होगा कि आखिरी गेंद पर कौन बाजी मार ले जाता है। फिर से एक बार सुंदर गेंद के साथ केवल 1 रन पर सीमित किया। 2 रनों का अवसर यहां पर, 150 रन पूरे और 151 का लक्ष्य जो कि शिवम क्रिकेटर्स के सामने। तो देखना होगा कि क्या शिवम क्रिकेटर्स 151 रन बनाकर जीतेंगे और सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे, या फिर अच्छी गेंदबाजी अच्छी फील्डिंग की बदौलत रोकने में कामयाब रहेंगे तरवड़ेम स्पोर्ट्स क्लब। इसी बीच अंपायर ने कहा इट्स टाइम एंड ओवर।
7.55 is the run rate that they need to score every over. That is almost 7 to 8 runs. Suraj Tari has been brought into the bowling attack right from the beginning. From the Shiv Prasad Gowde end. Let's play. Shot of length, a drive. And he gets off the mark, Mangesh and Mahesh Raikar. 151 is the target with the run rate of 7.5. It means almost 8 runs that they need to contribute every over. In these 6 overs of the power play will definitely be an advantage for the batsman. Wherein if they hit the ball right in the gap or the ball goes past the fielder, might reach to the boundary. A slight in the leg side, the ball drifted down to. A good steady start here from Suraj Tari, maintaining a good line length with medium pace. There's a lot of bowling to come. Someshwar Prabhu Desai, Amir Gadekar. Nicely walked in the gap. The ball might just race away to the bound. It's a very quick outfield there. And yes, it is. Boundary coming in the deep square leg region finds the gap and the ball raced away. And this is exactly what I talked about the power play overs. The ball, if right in the gap, might race away to the boundary. That is exactly what has happened. And that boundary will definitely boost the confidence of Mahesh Raikar. Test. Gentle hands. Much better line this time. Good improvisation from Suraj Tari. Tarvalem Sports Club defending their score of 151 against Shivam Cricketers Funda. Shot of lane, beautifully walked and played, but straight to the fielder there. Amir Gadekar, excellent piece of work, excellent piece of fielding in the point region. In the covers, I beg your pardon. Nicely worked with the gentle hands, and that dot ball marks the end of the very first over. 5 runs on the board. Sandesh Prabhu Desai has been brought into the bowling attack from Alok Shirodkar end to begin the second over. Score is 5 with the help of one boundary, which was nicely timed in the deep square leg region by Mahesh Raikar. And Sandesh Prabhu Desai has bowled an excellent over in this tournament. Every match. On the back foot, beautifully put away by Mangesh. Straight to MS Dhoni. Abhijit Naik.
quick delivery, slightly away. And a little bit of rise as well on this delivery. That a bit of extra bit of a rise has surprised the batsman in good collection from wicket keeper. Avishkar Mone is the wicket keeper. Once again, a very quick delivery. He's got that variation in line perfect. Sandesh Prabhu Desai got a lot of experience, okay, which he can make good use of. A little bit of bad on that occasion and finds the fielder in the covers. Amir Gadekar. As the cases are once again rising in Amir Gadekar doesn't want to take any chances while batting, wearing mask, while fielding, he's wearing a mask. A very quick, vicious delivery that was. Trying to keep the runs restricted with the perfect line at times. Some rising deliveries as well from Sandesh Prabhu Desai. This is second over. Another single adding up to the total that sums up the over number 2. 9 runs. So definitely with the shot, look at the body language of Mahesh Raiker. He's definitely today looking very good with the skills, with the body language, with the strokes that he's playing. He's full of confidence. On the back foot, he just played straight to the fielder. So Mahesh will probably say they wanted to aim the stumps. And that's the reason why he has alerted the backup fielder. Amir Gadekar, I guess he's there, yes. Yes is the call this time. Very quick work. Amok slightly fumbled there on that occasion, the captain of team Tarvalem Sports Club, which made a single comfortable for Mahesh Raiker, and Mangesh trying to give a good steady start, trying to stay there with open wicket partnership. And in the T20 format or in any game, the opening partnership has to be good. That gives the confidence to the batter, comes down the order. Oh, good looking drive, but straight to the fielder in the mid-off region. Excellent work there.
Just one run what the captain is going to get. Mangesh, after winning the toss, quickly deciding to bowl first and has restricted the opponents on 150 runs. Good looking drive this time, straight down the ground in between mid on and mid off. Bang! She goes from the bat of Mahesh Riker. Riker. Two boundaries and 1 6 so far in this inning. And he's definitely giving a good flying start to the team. Shivam cricketers chasing a target of 151 to win. Oh, nicely done once again. This time straight to MS Dhoni. He takes it. Good work, and yes, the stumping. Mangesh is out. The wickets are falling very quickly. The very first delivery of the fourth over. It's 24 for now, 2 wickets. Sabka Anna. And I believe Sarvana still remembers Debashi's Bakshi.
the fourth over for Sandesh Prabhu Desai. The very first delivery, very quick stumping day from Avishkar Mone, sending captain back to the pavilion. So both are new batsmen. On the other end is Sarvanna. On the striking position now is Gauresh. So very quick breakthrough here of 2 wickets. Mahesh Riker, and then it's captain who got out stumping. On the back foot he wanted to play, but a very quick delivery. What an outstanding bowler that he is, Sandesh Prabhu Desai. Every time he tries to just keep it tight, keep it perfect. With the variation so brilliant from him. Every bowler making the batsman think how to play. Look at the rising delivery. 1 or 2 or 3 rising deliveries every over. With keeping the line perfect, consistently a good line. If any bowler is keeping, that is Sandesh Prabhu Desai. With a little bit of spin and turn as well. Sometimes the vicious bounce which surprises the batsman. Nicely worked with the gentle hands, and waiting is a very quick call from Sarvanna. Sarvanna knows that he has to stay for a long time. The longer Sarvanna stays, it is better for team Shivam, cricketers Fonda, to get to the target of 151 to win. Going for the aggressive shot, once again beaten. What a tight line over, very economically so good. Sandesh Prabhu Desai, senior most, and taking the youngsters. What a good combination this team has, Tarvalem Sports Club. In their Portia's jersey of green. Looks like the match between South Africa and Australia. Shot of length and slightly away. A dot ball to mark the end of 4 overs. 22 for 2. To begin the fifth, it's Somesh Prabhu Desai on the bowling mark from Shiv Prasad Gowde, and the score is 22 for the loss of 2 wickets. So a lot of fielding change you can see in the offside. Once again, there is short third man, there is gully, there is point, there is cover, there is short extra cover. Amog now going in, replacing the fielder. There is mid-off. A lot of field has been positioned there in the offside. Definitely a wall of fielders there, and short extra cover. And extra cover is not on the edge of the boundary of 30-yard circle. He's very close in. But there is a mid-off, long on, Amir Gadekar. There is a short backward leg, Sandesh Prabhu Desai. There is a field in the deep square leg, Abhijit Naik, better known as MS Dhoni of Tarvalem Sports Club, who took a brilliant catch. And this time the ball heading straight to him. But the cap has added up to his ponytail, makes his hair look more longer.
Wonderful fielding after that brilliant catch of Mahesh Striker in that particular area. On the back foot, played with the full face of the bat, Sarvana. And Sarvana is a capable batsman. I've seen his batting. He can survive for a long time. He's a very consistent performer. Right in the block hole, straight away, beautifully put away in the long on region for a boundary. Shot of length pulled perfectly. One bounce, two fence, back to back boundaries. On the back foot once again, beautifully bowled. That was a catch going down. And what a comeback here from Somesh Prabhudesai. An opportunity here, and what a wicket that would have been for Tarvalem Sports Club. And everything is happening on this ground for the third quarter final. What a match this is. Absolutely going down the wire. The clash of two talented teams on this beautiful ground of Madkai Panchayat. This time the ball is up and there is a fielder beneath. Another opportunity, but slightly away, slightly in front of the fielder. Our director not out says he's quite in. A lot of drama what is happening on the crease. Completion of 5 overs, it's 33 for 2 wickets down. Thirty-three runs after the completion of 5 overs for the loss of 2 wickets is once again Sandesh Prabhudesai from Alok Shirudkar end. To Gauresh, having a good look at that, Gauresh, and letting the ball go past him. A dot ball to start with the last over of the power play. Score 33. Loud shot, confident appeal, and yes, goes the finger up. Gauresh is out. The third breakthrough here for Team Tarvalem.
catch the ball just going down after back-to-back boundaries being scored by Sarvanna. However, Sandesh Prabhu Desai gets the wicket number 3. So 2 wickets for Sandesh Prabhu Desai. Once again a loud shot, confident appeal for the caught behind. It's out, he's gone on 0 this time. Ullas Ofkar and Sandesh Prabhu Desai is on hat-trick. Shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Take her to the girl, them broke out on the floor. From you don't wanna work as performer. From you don't wanna man, we can't turn you on. Girl, make her see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah. Eat no yam, no steamed fish, nah, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, on the way this time, cold, I wanna be keeping. Play 33 for the loss of 4. And what a great match this is turning out to be. The wickets are falling very quickly, and Tarvalem Sports Club and try to get the grip of the match. I wanted to play this time inside edge of the ball. The ball is not going anywhere. Good bowling continues from the Alok Shirodkar end. It's Sandesh Prabhu Desai. And from Shiv Prasad Gowde end, it's Somesh Prabhu Desai. Nicely worked with the race this time in the deep long leg region. Could be a couple of runs here as MS Dhoni comes in very quickly and throw shy on the stumps. But by the time, it's too easy picking up here for the batsman. Sarvanna
and Rupesh trying to just stay on the crease and trying to form a partnership and play. A partnership will be very handy here for the team, Shivam cricketers, because they have already lost 4 and 3 wickets have been taken by Sandesh Prabhudesai. Good looking drive straight back to the ball. Excellent piece of work there. Good effort on the follow through by Somesh. Just trying to restrict and refrain by putting the perfect line in length. Inside out finds the ball. A slight room in the offside and plays in the covers for a single. Sarvana is the one batsman who's standing tall and putting his best foot forward and playing some amazing strokes. Some support is required for him from the other side. Can Rupesh provide him with that support, and can this be a good partnership which will put on some runs on the board? Of course, on the driver's seat for the moment, it has to be Tarvalem Sports Club with the 4 wickets initially. Yes and no between quickly. Sarvana is getting back to the crease. That was a very quick delivery from Somesh. Like father, like son. He also brings in the good variation. Quick one. Wonderful delivery, well bowled. May have missed the leg stump by a margin. Another excellent over comes to an end. 7 has gone by. It's 36 for 4. The over tight, very economically good bowler, Sandesh Prabhudesai. Good length. And very quick response from the fielder, KB, very quickly attacking the ball, not allowing the batsman to go for that single. And there is a fielder in the gully, Abhijit Naik, who is MS Dhoni. Shot third man, deep point, extra cover and long off on the back foot. And what is the best thing about Sandesh is he's not offering much for the batsman to work, and always keeps the batsman thinking. The variation in the length is brilliant too, with a perfect line right on the off stump. And he's mixing up so good. However, a single on this delivery with slight a bit of a fumble there from KB in the covers, which has allowed the batsman a comfortable single after those 2 dot balls from Sandesh Prabhudesai. Played with a soft handle but played straight back. Trying to just scare the non-striker. Oh, the ball is up and it could be the 4th wicket for Sandesh Prabhudesai. And yes, it is in the deep, in the short third man position. The fielder takes a simple catch.
Sandesh Prabhudesa is definitely making a mark in this particular match, which has already taken 4 wickets, and he's looking for more. And he was the bowler who was on hat-trick in this particular match. Absolutely, what a beautiful bowling from Sandesh Prabhudesai. He's making every batsman think how to play. He doesn't have the pace of 140 to 150. Just uses his mind so well. Such a great and a consistent performer. And that dot ball marks the end of 8 overs and the 4 wickets done of Sandesh Prabhudesai. And his bowling figure is 4 overs, 6 runs and 4 wickets. Completion of 8 is 37 for the loss of 4 wickets. Correction. Breathing goes high up and a lot of oxygen that a fielder needs. Of course, a lot of people feel wearing a mask is suffocating. But Amir Gadekar has developed that skill over a period of 1 year. He's quite comfortable. He can even sleep in the bed with wearing a mask. Half volley straight to the fielder. What a perfect catch from KB. Picked up beautifully. The very first delivery of the captain Amok Prabhudesai. And he takes the catch. This catch reminds me of the catch of Rashid Khan. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. What a big wicket this is. Sarvana, who was staying there and playing a good inning. He played a drive but played straight to KB. And what a perfect catch to dismiss Sarvana. Slightly on the back foot now the team, Shivam cricketers. Harsh walks in. So far it's a fall of the wicket number 6. And at number 8, it's Harsh who's walking down on the ground. Alongside Vishal. So the fall of the wickets, every regular interval. And in a great commanding position is team Tarvalem Sports Club. With such brilliant bowling from Sandesh Prabhudesai, who picked up 4. Amok Prabhudesai picked up 1 in the very first delivery. So Prabhudesai is making quite a good impact in this quarterfinal.
And of course, with the long inning played by Avishkar Mone, with 71 runs cameo, was just brilliant after the fall of the very quick wicket of Suraj Tari. Fuller on, well bowled. The bowlers are continuously dominating the batting side. They have not allowed the batsmen to settle down, form a partnership and play. Every over or two, there is a wicket. A lower full toss wanted to bowl right in the block. The slow one from Amog this time. Played straight to the long on fielder. By the time the fielder picks up and throws, 2 runs easy. And Amir Gadekar quickly apologizes, and that is what is good about cricket. A game of cricket is a game of gentlemen. When after 10 overs, Mangesh requested Amok Prabhu Desai for a fielder, he allowed and says, no problem, you can take it. Rising delivery, well done by Avishkar Mone. Once again, right on the thumb, and the thumb is swollen. He really need to consult a doctor because the way the thumb has aggravated. Pain relief spray. Good shot towards the deep mid wicket region. A little bit of fumble. They allowed the batsman for two. Trying to just gather the courage, trying to just form a partnership. Singles and twos will be very handy here to reform, reconstruct, rebuild the inning after the fall of very quick 6 wickets. Oh, rising delivery, just played it away straight to the fielder. Good shy on the stumps. One easy single. And turned out to be the overthrow. So another single means 2 runs adding up every delivery now. 9 was completed. It's 43 on the board for the loss of 6 wickets. As umpire says, over.
So 9 overs gone by and score is 43. Welcome my friend Sidhu Verekar. Fall of the wickets, 6 so far. Vishal and Harsh on the crease, trying to just gather some runs for the team and trying to chase a target of 151. Amir Gadekar from Alok Shirudkar end. The bowler with the mask. Very quick delivery. And in this tournament he has bowled a lot of wides, but today, being a fresh day, he's getting the line perfect. And Amir Gadekar is a big name when it comes to bowling. He's one among the best bowlers of Goa. Nicely put it away in the gap, but finds the field in the sweeper cover. That will be one. To just remind the spectators, in 1 over, he bowled almost 14 wides and 4 runs. So that is one unique record which he has set. Where in the very first over it was 18 runs. 4 runs coming from the bat and 14 in the way of extras wide. And look at this beautiful, one of the most significant ground of Madkai Panchayat and a big tournament by Madkai Yuvak Sangh T20 Championship. And I would like to extend my gratitude, thank you, I would like to say to the committee for giving me an opportunity in this huge tournament wherein 24 teams have participated all across Goa. Shot of length, a little bit of bat on that, the ball heading straight to the deep fine leg region for a single. So a lot of singles and twos trying to stay on the crease. And that is exactly what is the format of batting in the T20 matches. You need to stay there, just nudge for singles and look for two, wait for the right opportunity. Oh, inside edge, that was a very quick delivery from Amir Gadekar, but excellent piece of work there. Good fielding in the deep fine leg region. The ball just narrowly missed the stumps with a very quick delivery when bowled. And look at the pace that he's generating. It's reading 141 kilometers an hour. That is quite a bit of a pace and very quick in between the stumps, Amir. Right, wrapped on the pad at this time, a bit on the pace once again, but the line is so very perfect. Good improvisation from Amir Gadekar. In this very tournament, he was struggling to bowl the line, but look at this over, perfectly right on the target. Under the advice and guidance from Sandesh Prabhu Desai, who got 30 years of experience playing cricket. In the young talents who are coming up. Excellent piece of work, the good fielding, stop that single. So that dot ball marks the end of 10 overs 46 for 6. माका वाट समजलीना साथ गेले ऐकूक आयले घरचे पहुंचा है 47 रनों पर, विकेट गिरे हैं अब तक 6 और लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 151। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल और टीम जो ये मैच जीतेगी चली जाएगी सेमीफाइनल्स में और कल के दिन होगा सेमीफाइनल्स का मुकाबला। तो फिलहाल फिर से एक बार कप्तान आए हैं गेंदबाजी के क्रम में, शिव प्रसाद गावड़े एंड की ओर से आमोग प्रभु देसाई। बैकफुट पर खेल दिया इस बार 1 रन के लिए। विशाल और हर्ष की ये जोड़ी जो कि क्रीज पर इक्का दुक्का रन बटोरते हुए अपनी टीम के लिए
सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड आफ्टरनून। इस दिग्गज इस बड़े टूर्नामेंट का ये तीसरा जो कि क्वार्टर फाइनल्स, कल के दिन दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। सुबह के वक्त एमएलटी साकलिम और दोपहर के वक्त आमोना क्रिकेटर्स जो कि चली गई सेमीफाइनल में। आमोना ने कल के दिन नागेश्वर बांदोरा को मात दी कल दोपहर के मैच में। खेलने का प्रयास यहाँ पर गेंद हवा में, और इस मैच में बिल्कुल एक मजबूत पकड़ बना चुकी है टीम तरवड़े स्पोर्ट्स क्लब, और श्रेय जाता है अच्छी बल्लेबाजी की आविष्कार मोने ने। 71 रनों की पारी खेली, शानदार पारी, बखूबी साथ निभाया केबी ने। मगर जब गेंदबाजी की बात आई तो संदेश प्रभु देसाई ने 4 विकेटों की सौगात दी अपनी टीम के लिए और हैट्रिक पर थे। और दर्शकों को बता दूं कि इस टूर्नामेंट में 2 हैट्रिक ली जा चुकी है। पहले राहुल की ओर से हैट्रिक हुई। इसी बीच लंबा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर की मौजूदगी और एक कैच हाथों से जाता रहा। आमिर गडेकर का अच्छा प्रयास, मगर ये 7वां विकेट बिल्कुल हो सकता था। काफी नाराज कप्तान अमोघ प्रभु देसाई, ये उनके लिए दूसरा विकेट जरूर होता और टीम के लिए 7वां विकेट। 50 रन पूरे शिवम क्रिकेटर्स के, और अभी भी 100 रन बनाने बाकी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। 51 रन हो चुके हैं इन 2 रनों की मदद से। सुंदर ट्राई, मगर इस बार फील्डर को पाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और थोड़ी सी फंबल ने काम आसान किया बल्लेबाजों का। 1 रन के साथ 2 रन आसानी के साथ जो कि मिलते हुए, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर और तुरंत सॉरी कहा। और देखिए सॉरी भी ये शब्द कितना अच्छा है कभी कभार। और मिस फील्डिंग हो जाए सॉरी कह दो, कैप्टन इज ओके। अगर लड़ाई चल रही है 2 इंसानों के बीच, किसी ने कहा आगे सॉरी झगड़ा खत्म, डॉक्टर ने कहा सॉरी आदमी खत्म। खेलने का प्रयास किया इस बार, उछाल भरी गेंद, सुंदर गेंद के साथ वापसी की अमोघ प्रभु देसाई ने। और पिछले इंटरव्यू में मैंने पूछा अमोघ प्रभु देसाई को कि कौन सा प्रभु देसाई जो क्या है नाम करेगा और बिल्कुल छाप छोड़ेगा। संदेश प्रभु देसाई का सिक्का आज जरूर चला। पट गई गेंद, खेलने का प्रयास, फिर से एक बार उछाल प्राप्त की, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद के कारण अपनी बाहें खोल दी शाहरुख खान की तरह प्रशांत गडेकर ने, और वाइड का इशारा। और काफी बढ़िया टूर्नामेंट में उन्होंने अंपायरिंग की है। एमएलटी T20 में भी अंपायर थे, एसपीएल यानी कि साकली प्रीमियर लीग में भी अंपायर थे। और वहां पर हल्की सी जो कि फंबल होती, तो हल्की सी फंबल हुई, और उस फंबल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 11, और उसको जा पहुंचा है 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
तो बिल्कुल ब्लॉक होल में की थी पहली गेंद, जो कि 12 ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अमीर गड़ेकर को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में आलोक शिरोडकर इनकी ओर से। इस खूबसूरत मैदान यानी कि मड़कई पंचायत मैदान पर ये दिग्गज मुकाबला जो कि चलता हुआ 151 के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम शिवम क्रिकेटर्स ने अब तक 6 विकेटें खोई हैं, मगर हल्की सी साझेदारी अब नजर आ रही है हर्ष और विशाल के बीच। पटकी गेंद सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेज दिया डीप पॉइंट की दिशा में, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग के साथ गेंद को वापस किया, केवल 1 रन पर सीमित किया बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा है 57 रन। सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत इस बेहतरीन मैच में। बैकफुट पर खेल दिया इस बार, गैप में ढकेला, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, सुंदर फील्डिंग होते हुए ऐसे लगा कि गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए, मगर देखिए जिस प्रकार से एफर्ट्स लगाए फील्डर ने, काबिल तारीफ, और 2 रनों को रोका, अपने टीम के 2 रन बचाए। पटकी हुई गेंद तेज गति से, काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए अमीर गड़ेकर, और क्या ही रोचक रोमांचक मैच होता हुआ, गेंद और बल्ले के बीच का संघर्ष बिल्कुल लाजवाब इन दोनों टीमों के बीच, एक कांटे की टक्कर होती हुई। पटकी हुई गेंद बिल्कुल मिडल स्टंप, जो कि उखाड़ दिया अमीर गड़ेकर ने। इस प्रकार से 7वां विकेट शिवम क्रिकेटर्स का गिरा। तो आखिरकार हर्ष क्लीन बोल्ड होकर लौटे। तो बिल्कुल एक मजबूत स्थिति में टीम, और जीत की कगार पर तरवलेम स्पोर्ट्स क्लब होगी तीसरी टीम। अगर इस मैच को जीत पाएगी तो निश्चित तौर पर जाएगी सेमीफाइनल्स में। आज दोपहर का मुकाबला जो कि होने जा रहा है, चिन्मय क्रिकेटर्स फोंडा की टीम भिड़ेगी। तो जैसे कि परंपरा रही है इस खूबसूरत टूर्नामेंट की, तो चिन्मय क्रिकेटर्स फोंडा का मुकाबला होगा डेजलिंग क्रिकेटर्स मापसा के साथ दोपहर के क्षेत्र में। वो रहेगा आखिरी क्वार्टर फाइनल। हालांकि कल के दिन 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। एमएलटी साखली की टीम, जो कि पहली टीम रही सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली सुबह के वक्त, और कल दोपहर में आमोना 11 ने मादी नागेशयुद्ध बांदुरा को और सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत की। तो काफी सुंदर गेंदबाजी के बाद अब लौटे हैं संदेश प्रभु देसाई, और अपने आप को कहा अब लौट चले। तो इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 12 ओवरों की समाप्ति के बाद इसको जा पहुंचा है 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। तो
तो सोमेश को लगा है गेंदबाजी के क्रम में, जो कि शुरुआत होगी 13वें ओवर की। इसको जब पहुंचा है 59, 7 विकेट के नुकसान पर। तो केवल 3 विकेट जो कि अब बाकी शिवम क्रिकेटर्स के पास, और अभी भी लंबा सफर उनके सामने। पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया, इस प्रकार से 8वां विकेट जो कि गिरा शिवम क्रिकेटर्स का। मैदान पर उतरे हैं 10वें नंबर पर, यानी कि केवल 2 विकेटें अब रह गई हैं। तो पहली गेंद पर काफी तेज गति से गेंदबाजी की सोमेश ने, और पहली गेंद पर विकेट लिया विशाल का। तो बिल्कुल केवल 2 विकेट दूर अपनी जीत से। माफी चाहूंगा, केवल 1 विकेट। बैकफुट पर खेलने का प्रयास, मगर पूरी तरह से चूके। तो लगभग आज इंटरव्यू काफी रोमांचक होने की संभावना है। गेंद हवा में, और एक कैच के साथ तरवलेम स्पोर्ट्स क्लब जा चुकी है सेमीफाइनल्स में। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। और प्लीज नो शेक हैंड, ओनली पंच हैंड।
So Paresh Gowde sir is here with us, who will be giving away the man of the match as well as the maximum sixes. So requesting Abhishek to please make it fast. Mangesh, if you can please come and have a word